Let us discuss about the color and optics. A lot many pictures to discuss as well, but let us first dive into the theoretical concepts. See what all properties we have discussed. They were related to function by till now. Okay, the rheology and structural relaxation and whatnot. We have discussed they were related to function. Now let us dive deeper and learn about the most important thing. भाई डेंटल में हो, दांत लगा रहे हो, सो दांत दांत जैसा दिखना चाहिए ना, सो दैट इज एस्थेटिक्स. Let's say you are a man with really very good intellect, the best of the knowledge, the best of the acumen, but लुक्स अच्छे नहीं है, कोई भी सेट नहीं हो पाएगी. सो लुक्स एंड एस्थेटिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड द चैलेंज राइट नाउ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, आई एम टेलिंग दिस टू एवरी वन, यहाँ पे यूट्यूब पे भी एंड टू ऑल माई लाइफ क्लास वाले लोग भी. सी द बिगेस्ट चैलेंज इन डेंटिस्ट्री राइट नाउ इज टू develop a restorative material which is general purpose, technique insensitive, direct filling, tooth colored, color stable. It must be general purpose, whatever be the scenario we can use it, not like कि कुछ मटेरियल किसी में यूज हो रहे हैं कुछ किसी में यूज हो रहे हैं. इट मस्ट बी टेक्निक इनसेंसिटिव. लाइक composite is a very technique sensitive material. जरा सा भी कुछ इशू हुआ, things will go hassle bezel. Then direct filling must be able to directly fill in the patient rather than lab में बनाना है उसको और फिर उसको सीमेंट करना है. Then it must be tooth colored and the color stability is very important for aesthetics. पता चले चाय कॉफी पी रहे हैं, नेक्स्ट डे पीला पड़ गया, बेकार. Okay, so if we talk about the human eye, let us start with the basic of aesthetics. What is the basic of aesthetics? भाई जो आँख नकली दांत को देखेगी, the eye looking at the artificial tooth, we must understand that as well, so that we can alter the artificial restoration such that it appears natural to the human eye, if not to the technologies. Yes, so human eye perceives in the wavelength of 400 nanometer to 700 nanometer. Okay, 400 nanometer is known as violet region, 700 nanometer is known as dark red region. Okay, and when we have to talk about color, how does it originate? There is an incident light falling onto an object. This light is reflected and then reaching the human eye. Okay, and that is how we perceive color. So the reflected light plus में the wavelength of incident plus reflected light determine color. Okay, this must be understood. There are two aspects. Okay, so now let us focus on one of the diagrams given in Philips. See, this is the white light source, and when we pass it through a prism, this is an experiment which all of the students would have done in physics. This prism tends to refract the light into multiple colors. As you can see in this diagram, the colors are for 400 to 700. So anything above 700 is known as infrared, anything below 400 is known as ultraviolet. Now what we have understood with this experimentation is that the most visually perceptible region is from 540 to 570 nanometer, 555 being the most maximum value of visual perceptibility. This is an important value, must be written in the value register. Okay, now relative visual response of humans to wavelength of light. Now this is a graph that Philips has presented to us, or InnoService has presented to us, wherein they have talked about the relative response versus the wavelength of light
Normal में the green one is the normal vision, and the red one is the protanopia. Protanopia means red green color blind. You see red as green. Okay, so that is red green color blind, seen in 1% of the male population and 0.02% of the female population. आदमी अंधे होते हैं प्यार में, है ना? So yes, so what happens is, if you can notice, the maximum visual perceptibility is at somewhere at 555, even for protanopia, even for normal vision. But with protanopia we can notice one important thing. That the graph has shifted towards the left. Means red region से it has shifted towards the violet region. Red say it has shifted towards the violet region. That is important to note. That is how we understand graphs in Philips. Now another diagram in which we have discussed about three things: U, value and chroma. Let me first make you comfortable with this terminology, only then I'll introduce this graph. Okay. Now see, whenever a reflected light is reflected, as it reaches the retina, it generates a nerve impulse. Now this nerve impulse reaches to the cone cells. Now then the impulses reach to brain, and this is known as psychophysiological perception of color. This is the term that has been used in Philips, must be remembered. Okay, now since it is a neural response, and we all know nerves का कोई response है तो उसमें one thing is for sure, that is fatigue होगा ना भाई. nerves में fatigue होता है, ज़्यादा ट्रांसफर होता जा रहा है तो there will be a fatigue point, because it is physiology, basic physiology कि कोई भी body के cell में fatigue ज़रूर होगा. So this fatigue is very much important here. Why so? If we are continuously doing shade matching for a tooth, we are bound to experience fatigue, and then it will create a lot of problem, क्योंकि फिर optimum shade matching will not be happening. You can consider eye as a exceptionally sensitive differential colorimeter. Okay, exceptionally sensitive differential colorimeter. कोई बताएगा what is colorimeter? Anyone? आप बताइए please. Okay, decent enough. So it's an instrument that is used to measure color or the wavelengths, and then we determine the shade. It is very good, but actually my colorimeter is better than eye. But one problem is there with colorimeter: it doesn't work good on curved surfaces. Hence eye is considered better in that sense. So now if we talk about shade matching, means we have to match the color of tooth equal to color of restoration. Okay, यानी कि interaction of light reflected from tooth to eye is equal to interaction of light reflected from restoration to eye. Am I correct? That is the main goal. Okay, so now whenever light interacts with matter, there are four phenomena happening. Primarily reflection, absorption,
refraction, transmission. So reflection can be of two types mentioned in Phillips: specular reflection and diffuse reflection. Specular reflection means like a mirror finish, एकदम सफा चट बढ़िया दिख रहा है, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर शीशा, रिफ्लेक्शन एकदम परफेक्ट. और डिफ्यूज डल, जैसे कि चौक हो गया और टेबल हो गई, एनीथिंग लाइक दैट विच इज एक्चुअली में ओपेक but does not give a mirror like finish. Absorption: whenever light falls on something it can be absorbed. Opacity का मतलब क्या होता है? This cup is opaque because light is not passing through it, it is getting reflected. This is opaque. My specs, they are transparent. Why so? Completely being passed, and translucent is in between of the two. चलो एक क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चंस, शुभम तेरे पे है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत दिमाग लगा रहा है लेक्चर के बीच में. चलो, देयर इज अ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है? दो सरफेसेस हैं, लाइट सेम है. 20% of the light is being absorbed by surface A and 50% of the light is being absorbed by surface B. ठीक है, समझ आया? कौन सा सरफेस ज्यादा ओपेक है? विच इज मोर ओपेक? क्या बात है यार, वेरी गुड. बी इज ओपेक. रीजन बीइंग इतनी लाइट रिफ्लेक्ट अपने इसने अब्जॉर्ब कर ली है, 50% ऑफ द लाइट हैज बीन अब्जॉर्ब, सो इट विल लुक मोर ओपेक एज कंपेयर टू ए. ठीक है, 100% ऑफ द ट्रांसमिशन हो गई तो मटेरियल क्या कहलाएगा? आस्था आप बताओ. यस, ट्रांसपेरेंट. वेरी गुड. एंड एनीवेयर 0 से 100 के बीच में ट्रांसलूसेंट, 0 ओपेक. गुड. Sure. Then if we talk about enamel reflects also, it absorbs also, it refracts also, it transmits also. Its refractive index is 1.65 and it has been considered to be translucent as per Phillips. Now let us say we are doing shade matching of a tooth. This is the tooth we are doing shade matching for and it has a color. Now I am making a crown for it. It must have the same color. So ये info must be sent to lab. हाउ टू कम्युनिकेट? लैब को कैसे बताएंगे भाई? दो लोग थे, चलो दो हमारे मोस्ट पार्टिसिपेटिंग बच्चों का ही नाम ले लेते हैं. दिस इज आस्था, पार्डन मी फॉर दैट आस्था, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग. एंड दिस इज शुभम, कैप लगा के आता है लड़का हमारी क्लास में, ठीक है? दिस इज शुभम. Now, Astha and Shubham, both of them have done shade matching. दांत की नहीं कर रहे थे. They have gone to सरोजनी मार्केट गए हैं. सरोजनी मार्केट में they are looking for an overcoat. So Astha goes there and tells to the salesman, भैया please provide me Puce color. भैया बोलते हैं ब्रदर Puce कलर क्या है? तो so Astha goes like कि Puce color is basically dark red sir. It is dark red that is yellower and less strong than Canberry. ये मैं डिक्शनरी से पढ़ के बोल रहा हूँ साथ में. Dark red that is yellower and less strong than Canberry, paler and slightly yellower than average garnet, slightly lighter than pomegranate. और जो सरोजनी का सेल्समैन है वो ऐसे देख रहा है, अजीब है.
वहीं पे शुभम गया, बोलता है जी लाल कलर का कोड दे दो, उसको कोड दे देते हैं। पर इसका जो लाल कलर है और इसका जो पीयूष कलर इसने डिसाइड करा, दे आर डिफरेंट। अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम हो गई, देर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कलर। और अगर हम ऐसे वर्बली कलर बताएंगे, ये डार्क रेड दैट इज येलोअर लेस स्ट्रिंग देन क्रैनबेरी और सब कुछ, तो भाई साहब बहुत ही भसड़ हो जाएगी। वी कैन नॉट कम्युनिकेट द बेस्ट ऑफ द accurate or the most accurate way of expressing is not at all verbal तो है ही नहीं सही। so we need to find an objective way of describing color जो कि easy हो समझने में। so what we did was we came up to 3 terminologies: hue, वैल्यू एंड क्रोमा। चलो इनको अब अच्छे से समझते हैं, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यू इज़ द डोमिनेंट कलर। जो मेरी स्क्रीन में जैसे आपको दिख रहे हैं ये सारे कलर्स, दे आर डोमिनेंट कलर्स। ओके, चलो इसमें से मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ये सारे अगर आप ऐसे देखो, ऐसे, दीज आर योर डोमिनेंट कलर, सो दीज आर योर यू। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक चीज़, मैंने ब्लू चूज़ कर लिया। ठीक है, ये है डार्क ब्लू, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ ये होता जाता है लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ये है क्रोमा, दिस इज क्रोमा। वैल्यू क्या होता है? ग्रे स्केल होता है। ठीक है, उसको भी मैं समझाता हूँ। लेट अस से कुछ एक होगी फ़ोटो, चलो ये फ़ोटो ही ले लेते हैं। आई गो टू दी एडिट ऑप्शन, इसमें देयर इज समथिंग नोन एज सैचुरेशन। मैं सैचुरेशन में ना एकदम नीचे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दैट इज वैल्यू। कैसे? टूथ का कलर है, गम्स का कलर है, डिफरेंट कलर है। गम्स आर पिंक, टीथ आर वाइट, बट वैल्यू में इट्स नॉट लाइक दैट। वैल्यू इज आइदर लाइट और डार्क ग्रे, ग्रे में आता है। यू कैन सी गम्स और टीथ दोनों ही ग्रे का पार्ट है। गम्स आर डार्क ग्रे, टीथ आर लाइट ग्रे या वाइटिश की तरफ। दिस इज वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूं दैट येलो ऑफ अ लेमन, लेमन का येलो कंपेयर टू चेरी का रेड, किसकी ज़्यादा वैल्यू है? मतलब कौन ज़्यादा ब्राइटर है वैल्यू में, ग्रे स्केल पे? लेमन। ठीक है, ऐसे देखते हैं। और बताता हूँ एक बेटर एग्जाम्पल। चलो ये है जैसे, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, बट मैं इसको एडिट ऑप्शन में ले जाकर मैं इसको सैचुरेशन देखता हूँ। अब देखो, अब ये डिफरेंट कलर्स ऑन अ ग्रे स्केल आर प्रोवाइडिंग अस लाइटर डार्कर, लाइटर डार्कर। देखो ये लाइटर हो गया, ये डार्कर हो गया, ये फिर डार्कर हो गया, ये लाइटर हो गया, ये डार्कर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है ना? वैल्यू डिफरेंट कलर्स की कंपेयर करी जा सकती है। वो वैल्यू इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस टू कंपेयर डिफरेंट कलर्स ऑल एट वंस। चलो, नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट वैल्यू एज वेल और क्रोमा एज वेल। मान लो मेरे पास रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है। तो रेड येलो ब्लू क्या कहलाता है? अच्छे तो डे नींद से, ठीक है, गुड। सो इट इज यू, ये यू है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट डार्क रेड, लाइट रेड, आज तक कोई बताना चाहिए, तो क्रिम्सन रेड, चेरी रेड, बेबी रेड, चलो होगा कुछ, प्यूज ये आर क्रोमा। ऐसा समझ लो आपके पास एक बाल्टी है कलर की, आपने पहले 4 ड्रॉप रेड के डाले, फिर 5 ड्रॉप डाले, 6 ड्रॉप डाले, 7 ड्रॉप डाले, 8 ड्रॉप डाले, 10, 12, 25, 30 डाले, तो आप क्रोमा बढ़ा रहे हो। दिस इज क्रोमा। और वैल्यू मैंने आपको बताई दिया, वो ग्रे स्केल होता है। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैल्यू, बिकॉज इट इज फर्स्ट टू बी परसीव्ड। अगर आपका वैल्यू मैच नहीं कर रहा है देन शेड मैच इज कंप्लीटली फॉल्स फॉर यू। ठीक है, नाउ देयर वर डिफरेंट
methodologies incorporating U in it. One of them was Scilab. Before coming to Scilab, let me just discuss with you one of the photographs. This one. This is the Munsell color space. 3D Munsell color space. Now what we need to understand is how it is representing color. See, value increases from black at the bottom center to white at the top center. Okay, on the z axis value is increasing. Then chroma increases from center radially outwards. ठीक है, आप देख सकते हैं रेड पे क्रोमा अगर आप देखोगे तो इट इज इंक्रीजिंग रेडियली आउटवर्ड्स एंड यू अकर्स इन सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन. ऐसे जो पूरा घड़ी बनी हुई है या एक सर्कल है उसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे विद इन अ सर्कल तो वो यू चेंज हो रहा है. ठीक है, एंड एज यू आर गोइंग एक ही सर्कल में सेंटर से बाहर तो क्रोमा इज चेंजिंग. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट ग्राफ regarding the Munsell color system. Now let us come on to the Scilab. What is the full form of Scilab? Commission Internationale de Éclairage, LAB. What does LAB stand here? L is basically your value, A is your red green axis, and B is your yellow blue axis. Anything meaning plus A means more red, anything meaning plus B means more yellow. That is how it works. Now if I'll show you the graph. So this is how a Scilab graph is shown. This point A means they have tried to denote the color of an apple in the form of Scilab space. Why we are saying space? Because it is occupying a 3D format, तो इसलिए इसको space बोला जाता है. देखो value has been set as 42.83. Red green axis पे it is 45.04. Obviously plus A because red के पास है, and yellow blue पे it is 9.52 because yellow बहुत ज़्यादा कम है, 9 के आसपास है बस. कलर शेड देखो A2 पोर्सिलेन का. इफ वी हैव यूज्ड A2 पोर्सिलेन, A2 पोर्सिलेन एक शेड है जो कि दांत के कलर के आसपास है, ऐसा लेट अस अज्यूम. सो इफ वी सी हियर L इज 72.99 हैविंग अ वैल्यू ग्रेटर देन रेड वाला एप्पल. A इज 1 बिकॉज रेड बहुत कम है ना, एंड B में इट इज 14.41 मीन्स येलो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एप्पल. दैट इज हाउ वी कंपेयर इट. ओके, देन देयर इज दिस क्रोमा वेक्टर. क्रोमा वेक्टर इज कलर इज दिस डायरेक्शन में. अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो माइनस में होता, एंड वेक्टर मीन्स डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. सो हियर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लस माइनस का साइन लिया गया है एंड इट हैज बीन सेड कि ये वेक्टर है. नाउ यू एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड. सी आउट ऑफ यू, value, chroma. Value is most important and individually considered. U is also important and individually considered, but chroma is not much important in dentistry. Why so? लिखा हुआ है, फिलिप्स में भी लिखा हुआ है. It has been mentioned in almost every textbook and every shade guide is made saying that chroma is not much important. Then why? What is the reason for it? I've read many articles for the same and I've come to the conclusion that the reason is, firstly, teeth don't show much chroma variation. Okay, teeth do not show much chroma variation, and chroma and value are linked. Chroma increases, value decreases. Why so? Consider being comparing light red and dark red. So dark red means chroma is more, however on a value scale it is more gray, तो इसलिए it is less. Okay, so comparison करेंगे तो, and also human eye can't reliably detect chroma difference.
ठीक है, लाइट रेड डार्क रेड तो पता चल जाएगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी माइन्यूट कलर डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल दिस वन, अब मैं इसमें और इसमें ये दोनों में बस कंपैरिजन करूं, ओनली दीज टू शेड टैब्स, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द क्रोमा डिफरेंस। हाँ, इतने बड़े में पता चल जाएगा, बट इतनी रेंज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, दैट्स वाई आवर आईज आर नॉट ट्रेन्ड इनफ फॉर दैट। नाउ if we talk about the shade guide, Vita Classic Shade Guide is what is very commonly used. Let us discuss this photo now from Philips. See, this Vita Classic Shade tab has certain arrangements in it. Firstly, we would have to understand that this first one, this A arrangement, is as per the U dominant color, B1 is as per value, and C is just a random arrangement based upon, let me just check, alternate arrangement color difference according to lightest tab. Now this won't be effectively understandable from this photo. Let me just make it much more understandable for you. I'll just go to the edit option, the saturation, and then I'll be able to show you better. If I take the saturation down, you can see A is not as per value, B is as per value. Okay, from here to here the value is kind of becoming darker and this one is lighter. Okay, now if I talk about the value or U thing, see, now this arrangement is as per U. I can say that A is more of the red brown. The most dominant color will help us understand this. This is red brown in color. B is reddish yellow. C is grey की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, and D1 is red grey in color. Okay, you must understand this order also. Please make a note of this order. For increasing value, the order is B1 having the lightest value, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4 and C4. Try learning this. The one who comes out with the most innovative method of learning this, मेरी तरफ से इनाम मिलेगा, ठीक है? So this is done. Now anything? Let us come back here. So please make a note of this, that A is red brown, B is red yellow, C is grey and D is red grey. Always remember, shade guide alone is not reliable. Shade guide alone is not reliable. You also need to send certain drawings or descriptions or photos to the lab for a reliable match of the shade. Photos are always better, but photos must be well calibrated and taken using a DSLR camera or a mirrorless camera using a something known as gray card. You can explore it further on YouTube. Baki, it's not in the scope of this chapter, so I'm not going into the detail. Now, observer effects are also very important. The person making the restorations, we have discussed about it. The restoration itself, we have discussed about it. Now the person seeing it, we must also discuss about it. Now it is something known as Bezold-Brook effect. So when a person is there in a less lighted room, rods are more effective and cones are less effective. Whenever someone goes into a well lit room, cones become doubly effective. Color perception kind of changes. So that is what I am saying, that the color changes in different lighting conditions, in the less lighted and more lighted condition. This is Bezold-Brook effect. There is something known as metamerism.
See, what I told you was that color is reflected light plus wavelength of incident plus reflected light. So wavelength of incident light is also very important. So color changes in different lighting conditions. This is known as metamerism. This must be understood. Also, if you are doing shade matching in a red background, the chances are that you will be seeing greenish when shifting. And if you are doing it in the yellow background, you will be seeing bluish. The best example is just look into the sun, close your eyes, and for a moment you will be seeing a greenish blue patch in front of you. So the background colors also affect a lot, or the colors around the shade being matched also affect a lot. That is very important and must be understood. Now the important concept of fluorescence. Let me explain you this. So I remember one of my friends, she is from South Delhi and studies in DU. इंटर्नशिप में शी केम फॉर अ फिलिंग, मेरे पास फिलिंग कराने आई. फिलिंग नहीं, हाँ, एंटीरियर कैप लगाना था, ब्रिज था, सॉरी ब्रिज. मिसिंग टूथ वॉज सेकेंड क्वाड्रेंट 1. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट 2 के सपोर्ट पे वी क्रिएटेड दिस ब्रिज. ठीक है. नाउ दिस ब्रिज वॉज मेड फ्रॉम अ लोकल लैब, बिकॉज वो पैसे नहीं दे रही थी मुझे, बीइंग अ साउथ दिल्ली, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने लोकल लैब से बनवाया. एंड देन शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी हैड दिस ब्रिज, एवरीथिंग वॉज गुड, शेड मैचिंग भी मैंने बढ़िया करी. आई मेड यूज ऑफ समथिंग नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू मैच द शेड. बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है. एक्सप्लोर इट, व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. Vita easy shade के नाम से it comes up. Then after doing that she went to a club, मतलब क्लब में गए थे with a boy she was fond of. मैं तो दोस्त हूँ, मुझे तो jealousy होगी, but ठीक है. She went with a boy and that boy was also planning to propose her, या पता नहीं क्या था, कुछ तो बढ़िया सीन चल रहा था उन दोनों का. So we went to club. Then inside the club, there are UV lights. ठीक है. तो क्लब में डिचिक डिचिक लाइट्स जलती हैं, गाना चल रहा है, एवरीथिंग चल रहा है और बढ़िया चल रहा. Suddenly next day this girl comes and beats me like hell and curses me like hell. Blocks me from her contacts and गाली पे गाली दिए जा रही थी. Later I went and apologized to the best of my manly capacities by sending her Ferrero Rocher and flower bouquet and whatnot. Eventually she was, उसको मैंने मना लिया, but then I asked problem क्या हुई थी. So she told that you had given me a bridge that didn't show up on the club. मेरा मतलब होती, this खाली जगह was being shown in the club. मेरे को एम्बेरसमेंट हुई एंड दैट गाय जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम मी. खुश तो मैं बहुत हुआ कि वो लड़के का इंटरेस्ट चला गया, बट द प्रॉब्लम विच इंट्रीग्ड मी अ लॉट वॉज कि ऐसा कैसे हो सकता है. देन आई रेफर्ड बैक माई फिलिप्स टेक्स्ट बुक, शायद मैं भूल गया था कुछ टाइम के लिए, दैट नेचुरल टूथ हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज फ्लोरेसेंस. दैट इज व्हेनेवर नेचुरल टूथ कम्स इन अ यूवी स्पेक्ट्रम लाइट के कॉन्टैक्ट में, द लाइट इज 300 to 400 नैनोमीटर. what happens is natural tooth absorbs that light and releases its own light and becomes like a light source with releasing wavelength 400 to 450 nanometer. That is blue white spectrum में it releases light and that is an indication of a natural, मतलब एक characteristic property of a natural tooth. But in an artificial tooth, there must be things known as fluorescing agents. What are fluorescing agents? Fluorescing agents are agents that kind of reflect this fluorescence. They absorb and then release that so as to mimic the natural tooth. Local labs के अंदर
fluorescing agents are not incorporated in ceramics and composites, and that's why they appear as black window whenever in club. Then I understood my mistake and I made sure that I will never ever send work to certain local labs, or if sending them, I will ask them about the ceramic or composite that is being used. We are in good talking terms still, and I have made sure that I'll always fabricate a bridge from local lab whenever the girl of my interest is going to club with a boy he or she likes it. Okay. So now coming on to the last property, that is radio opacity of color. So see, anything and everything related to dentistry, if having radio opacity is advantageous. Why so? Let us say I have done a filling. This is the tooth and I have done a filling over it. I have taken an X-ray. If this restoration appears radio opaque, that is advantageous for me, because then I can assess the margins and see whether there is a gap or not on the X-ray. Let's say I have given a denture to a patient. Teeth breaks or the denture breaks, and the fragment is swallowed or goes into the chest. An X-ray is taken. Now if the X-ray is taken and we cannot see the fragment, it is a havoc. It will always be there. But if we can see it in the X-ray, we can take it out and try to understand what happened exactly. Okay, so therefore radio opacity is very important in that sense. So anything having an atomic number of greater than 19, which is of potassium, is considered radio opaque. Strontium and barium are added to provide this radio opacity. Over time in Philips, it has been written that dentine has a radio opacity equivalent to alumina, and enamel has been considered to have a radio opacity twice of dentine and alumina. And for a denture resin fragment, American Dental Association says that for a 2 mm denture resin fragment, it must have a radio opacity equivalent to or greater than 0.2 mm of copper. Only then it is approved. Okay, so now after this we'll be going towards thermal properties.